وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، مقصد اور منشا ایک ہی تھا کہ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور کبھی ناکامیاب نہیں ہوتا۔ ہماری خدمت کا جذبہ، ہمارا چین، ہمارا سکون اسی سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں سب کا تعارف کرا دوں۔ آج ہمارے حالات، ہمارے جذبے ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے خدمت کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، کہ ہمارے انسپیکٹر صاحب، ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک ایکسپریس ٹرین، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، بنگلور سے لے کر دلی کے لیے نکلتی ہے۔ جب وہ نکلتی ہے اس کے سامنے ہلز اسٹیشن بھی آتے ہیں، دریا بھی آتی ہے، پہاڑ بھی آتے ہیں، پودے بھی آتے ہیں، اور جنگل بھی آتا ہے، باغ بھی آتا ہے، ندی بھی آتی ہے، مگر ٹرین اس طریقے سے جاتی ہے کہ اسے کہیں رکنا نہیں ہے۔ چاہے وہ باغ ہو، چاہے وہ ندی ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، پودے ہو، چاہے وہ جنگل ہو، اس طریقے سے وہ جاتی ہے کہ اس کو کہیں رکنا نہیں ہے۔ یہی مثال اس انسان کی ہے جس کے جذبے میں خدمت خلق اور قوم کا جذبہ، لوگوں کی مدد، چیریٹی کا جو جذبہ ہوتا ہے، جب وہ نکل پڑتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کون سی تکلیفیں اس کو آ رہی ہے، کون سی خوشیاں اسے آ رہی ہیں، کون اسے بڑھا رہے ہیں، کون اسے گھٹا رہے ہیں، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس اس کا جذبہ، اس کا خیال وہی رہتا ہے جہاں خدمت خلق ہوتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹرز لوگوں کا، جنہوں نے یہ قدم کو اٹھایا ہے اور ہم لوگوں کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، مختصر میں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو 5 طریقوں سے۔ یہ 5 طریقے کل سے چلتے آ رہے ہیں، آج بھی چلیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہی 5 چیزیں ہیں جس میں آزمایا جاتا ہے اور چھٹوا نہیں ہے۔ چاہے ٹیکنالوجی جتنی بھی بڑھ جائے، یا ٹیکنالوجی نہیں تھی یا ہے یا اور جو ہوگی، لیکن اس انسان کو آزمانے کا جو مادہ ہے وہ 5 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے انسان کو آزمانے کا جو معاملہ ہے والخوف، ڈر سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، آپ اس کو پار کر دیں گے۔ والخوف، اس کے بعد والجوع، جب اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر والجوع، بھوک اور پیاس سے آپ کو پریشان کیا جائے گا، بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ اگر وہاں سے بھی آپ کامیاب ہو گئے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آپ کے مال کو نقصان کیا جائے گا، آپ کے مال کو نقصان کیا جائے گا، پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے، آپ خدمت کا جذبہ اور آگے بڑھاتے چلے گئے، تو پھر وَالْأَنفُسِ، اپنے نفس کو
कभी आपको इग्नोर किया जाएगा, कभी आपकी बेइज्जती की जाएगी, कभी आपको मजलिस से उठा दिया जाएगा, कभी आपको मजलिस में आने नहीं दिया जाएगा। वो नफ्सी, और आपको कभी अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश होती है, कभी बीमारियां आ जाएंगी, कभी शुगर आ गया, बीमारियां आ जाती हैं, आप उसमें भी कामयाब हो गए और उस बीमारियों को आने के बावजूद भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करके आप आगे बढ़ गए। वस्समरात, यहाँ मुफस्सिरीन किराम समर के माने फल के होते हैं, यहाँ जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वस्समरात यानी आपकी औलाद के बारे में आपकी औलाद के बारे में आजमाया जाएगा। कभी आपकी औलाद की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी आपकी औलाद को नुकसान हो जाएगा, इस तरीके से आपको आजमाया जाएगा। सबसे पहला डर खौफ मिनल जू, भूख और प्यास, व नक्सिन मिनल अम्वाल, आपके माल और दौलत को नुकसान किया जाएगा, वल अनफुसी यानी अपने नफ्स को, वस्समरात अपनी औलाद को, वबश्शिरिस साबिरीन, जो ये सब मामलों को बर्दाश्त करके आप सब्र करते हैं तो वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों के लिए हिदायत है। और जब ऐसी मुसीबतें उन पर आती हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ऐसी मुसीबतें आती हैं तो कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह ये सब तेरा था, हम भी तेरी ही बारगाह में आने वाले हैं। तो बहरे कैफ माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई और मुबारकबादी देता हूं मैं खुसूसन बिलखुसूस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के तमाम जिम्मेदारों को और आए हुए मेहमान खुसूसन बिलखुसूस हमारे नईम साहब और हमारे आप हजरत नौशाद आलम साहब और हमारे डॉक्टर हुसैन साहब और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, करता धरता जो हैं, हमारे सादिक इरशाद साहब और इनकी पूरी टीम, हाफिज अहमद अली साहब और डॉक्टर अर्शिया सुल्ताना साहिबा, मोहम्मद आजम साहब, मोहम्मद अज्जत खान साहब, मोहम्मद मजहरुल इस्लाम साहब, ये सब डॉक्टर्स हैं, मोहम्मद हुसैन शरीफ साहब और डॉक्टर सैयदा खातून साहब, सायरा खातून साहब और फैजिया शाहिद साहब, अंजुम अफसर साहब, उज़ैर यूसुफ साहब, शेख मोहम्मद रज़ाक साहब और इशरतुर रसूल साहब, नयाजी अब्दुल्ला खिजर साहब, अनिल कुमार साहब, आरिफ जिलानी साहब, नाजिया सिद्दीक साहिबा, मोहतरमा सायरा खातून साहिबा, जनाब जमीर पाशा साहब, मोहतरमा नसीम तस्नीम साहिबा, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपकी जिंदगियों में तब्दीलियां अता फरमाए, आप जिसको हाथ लगा दे अल्लाह शिफा अता फरमा दे। आमीन आमीन। एक हकीम साहब लिख रहे थे, हर कोई भी आता था तो कोई भी तबीयत बोलते तो उसको पेट साफ होने की दवा देते थे। शागिर्द सुबह में देखा, सुबह से शाम तक वो परेशान हो गया, बोला कि हकीम साहब मामला समझ में नहीं आया, कोई सर में दर्द बोल रहा है तो आप पेट साफ होने की दवा दे रहे हैं, कोई पेट में दर्द हो रहा है तो वही दवाई दे रहे हैं, मामला क्या है? तो वो हकीम साहब ने एक तारीखी जुमला कहा था, उन्होंने कहा दवा एक बहाना है, शिफा हक के पास है। उन्होंने कहा दवा एक बहाना है, शिफा हक के पास है। अल्लाह ने आपके हाथों में वो हुनर और वो शिफा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का करम ऐसा हो जाए, आप किसी भी चीज को देखे छुए तो अल्लाह वो उसमें शिफा अता फरमा दे। शर्त यह है कि खिदमत खल्क हमारे दिलों में और हमारे ख्यालात में आनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही तरीके के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। Assalamu alaikum, good afternoon to everybody.
I request our today's chief guest, Janab Inspector Naim Sharif Saab, who has been working with the Office of Governor, Government of Karnataka. Alhamdulillah, sir has been very instrumental in guiding me, in guiding my entire team of our organization, who has been taken active part in recent Wayanad floods, Kerala, Manantwadi, and Churalmala. I think all the volunteers who have associated with this team know well what work we have done by the grace of Almighty Allah Pak. Sir has been deputed with Governor now. इससे पहले सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA की जो टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें काम कर रहे थे सर. उससे पहले सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बेंगलुरु की यूनिट में सर थे. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी दैट सर इज टुडे विद अस. अल्हम्दुलिल्लाह. I give my mic to sir to speak few words on today's occasion. Respected dignitaries on the stage, my dear doctors, and of course all my friends, assalamu alaikum everyone. मेरे बारे में उतना बड़ा बड़ा तारीफ करने के लायक नहीं हूँ. Just I'm a small person. सडनली इन्होंने बुला लिया था. आज गवर्नमेंट का सिचुएशन लिटिल टर्मोइल है. लॉट ऑफ डिफिकल्टी सिचुएशंस आर गोइंग ऑन एज यू ऑल नो. फिर भी मैंने वक्त बना लिया बिकॉज मेरा एक एम्बिशन था. When I was a small childhood, I wanted to become a doctor. Unfortunately, मेरे को मार्किंग नहीं मिला, so इंजीनियरिंग मिल गया तो I just went to engineering. लेकिन टारगेट अचीव किया मैंने. Finally, I married a doctor. I married a doctor. My wife is a doctor. My brother-in-law is a surgeon. My brother-in-law's wife is a gynecologist. All my group of doctors, except I'm a police officer. Alhamdulillah. I just want to congratulate you all. आपने बहुत मेहनत किया है. So you are coming to a grassroots level. Coming to the ground level to cure the public. Alhamdulillah, I am very much thankful for all of you. And also एक अच्छा सा program कर रहे हैं जिसमें this belt Bangalore 45 is a particular belt where it is blacklisted in the entire Bangalore. You know, I don't know पता है नहीं है. It's a blacklisted area. But फिर भी आप लोग आके सामने बढ़ के you want to educate people, you want to give them treatment. I thank you one and all, and especially the Light India Foundation, Dr. India Charitable Trust, and our National Institute of Unani Medical Hospitals taking much care. I respect them and thank you all. Thank you one and all. Jazakallah. Thank you very much, sir. Now I request our the place owner Naushad Saab to please felicitate our Inspector Naim Sharif sir. Yes, definitely, sir. We will definitely. Owner of this place. Thank you, sir. Thank you, sir. I am recording the entire program. My hand is being called for us. Yeah, called for us. Now I request Sayyid Sadiq Saab to felicitate our senior doctors, Dr. Azam sir. Kindly accept our felicitation and our services, sir. Small moment of certificate of appreciation. गुलपुशी कबूल कीजिए सर. सदर साहब आप भी सर, नईम शरीफ साहब, सैयद सादिक साहब और सदर साहब तीनों मिलकर सर की फेलिसिटेशन और गुलपुशी करेंगे. Sitting there. He's not looking at us, no? He's not looking at us. Thank you very much, Dr. Muhammad Azam sir, who is a clinical register, National Institute of Unani Medicine, Bangalore. जब भी मैंने सर को कॉल किया है, whenever I rang call, मैं सर को फ़ोन करता हूँ. Sir has never disappointed me, whether it is Tumkur, whether it is Bangalore, wherever the possibilities arises, sir has obliged to us and he has taken up this initiative. Thank you very much, sir. I request Sadiq Bhaiya, Naim sir and हमारे सदर साहब डॉक्टर अरशद सर की गुलपोशी करें. डॉक्टर प्रोफेसर अशिया सुल्ताना मैम की गुलपोशी करें. अमृता प्लीज ज्वाइन. अमृता.
Madam Dr. Arshia ma'am has been very instrumental. Last program 15th August we have invited Dr. Arshia Sultana ma'am to Jamia Gulshan Fatima. Ma'am has been obliged and highly helpful. बहुत बहुत शुक्रिया ma'am. Thank you very much ma'am. Actually, I like to thank Irshad sir, Hussain, because when I came on 15th August, they just said me, I only first proposed that they are so good girls are there, I like to treat to them and I want to do anemia camp for them. He happily said that, yes madam, we'll do it. And within 15 days, we have instrumented it. And we should thank 2 days. मैं सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमको फंक्शन हॉल दिया जिसकी वजह से हमने बहुत सुकून से बैठ के काम किया, क्योंकि अगर हम पंडाल में करते तो गर्मी में परेशान होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताउन रहा जिसकी वजह से माशाल्लाह इनकी वजह से हमारा काम आसान है. I request Dr. Arshad sir. Arshad sir का एक इवेंट बोलता हूँ. When I went to Assam, when there was a massive flood, Arshad sir has given 150 boxes of Khamira Marwari, which is very important for prohibiting communicable diseases. I give heartfelt thanks to Arshad sir for helping the flood victims of Assam in 2022. Thank you very much sir. आइए सर, नौशाद साहब. शाल. Thank you very much, Dr. Arshad sir. We have few more certificates to be given. I request individual doctors to please. One more important certificate will be given to Dr. Mohammad Hussain Sharif. I can't get up and do it all this. It's difficult for me. ये हुसैन साहब के बारे में एक बात मैं बता, जैसा उन्होंने बोला ये आसाम की बात जो कह रहे थे, ये जब इन्होंने हमको बताया कि फ्लड वहाँ पे है और हमें वो देना है, तो आपको बता दूं वो जो भी दवाएं आई थी वो बेंगलोर के लिए आई थी और वो आउट ऑफ दी वो करके हमने इनको कहा कि ले जाइए बांटिए, मैं एडजस्ट करूँगा उनसे, इनके जज्बे को देख करके, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को हमने, तो फिर बाद में हमने इन्फॉर्म किया तो वो लोग भी खुश हो गए. Thank you very much, sir. Now I request individual doctors to please come on the stage and receive the certificate. Dr. Mazharul Islam is there, ma'am. Dr. Samaira Khatun, Department of Ilmul Khawalat wa Amraz, please come on the stage. Thank you so much for your services, ma'am. Amrita, Zara. Dr. Faiza Shahid, Department of Ilmul Khawalat wa Amraz in Iswan. Amrita, Yeah, coming. give the phone. Yeah. Can you take this? अरे रे मैं दो फोन कैसे है उसको. Dr. Faiza Shahid, Department of Ilmul Khawalat wa Amraz in Iswan. ये लो उनका फैजा मैडम का लो.
Dr. Anam Afsar, Department of Jarahat. Department of Surgery, sir. In Unani we call Jarahat, sir. Dr. Uzair Yusuf Mir, Department of Ilaj bil Tadbir. हाँ हाँ रिकॉर्ड ही हो रहा है ठीक Mental therapy. video we are taking video. This is just you have to take video. It's there already, it's running. Dr. Sheikh Muhammad Razif, Department of Mahiyatul Amraz. Truly it is awesome. Dr. Humaira Zaki, Department of don't know. Dr. Humaira Zaki, Department of Pathology. Mr. Jilan, pharmacist of National Institute of Unani Medicine. आइए जिलन भाई, दवाई देते हैं सर ये फार्मेसी में. क्या है सर्टिफिकेट? आरएफ जिलानी. ले ले मैडम तस्नीम फातिमा, फार्मासिस्ट. कम अमृता जरा. फोटो जुटो. थैंक यू मैम. मैडम तस्मिया सुल्ताना, लेक्चरर हैं मैडम. आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कम ऑन द डांस. Mr. Zamir Pasha, paramedical staff. Madam Amruta, please come. Madam Amruta has been very instrumental, sir, in helping Wayanad flood victims.
voluntarily services she has done. She also run one NGO by name Samantha, sir. Samantha Trust. Thank you very much, Amrita. Saida Zara, sir, she also helps the victims of women and child abuse, and she is the vice president for that organization, sir. Javed Khan, sir, vice president Imam Hazza Movement. Maulana Ahmad Ali Hazrat, vice president Imam Hazza Movement. Okay.